more on our speaking part and more of advanced sentences, I could say. अभी जो भी Okay. हमारा यूनिट 7 तक था वो हमारा बेसिक बेसिक काइंड ऑफ कंप्लीट हो गया. Okay. Now from unit 8 onwards, we look at how to speak advanced sentences, how to make advanced sentences basically, and how to speak more of it, I would say. Because basic तो बहुत easy होता है, right? Difficulty आती है जब हमें Right. हट के कुछ बात करना रहता है, हट के कुछ बोलना रहता है. So that's what we mainly see in unit 8 onwards till unit 12. Okay, just give me one second. Okay. Quickly share screen. Now, as I told you, we'll be starting with unit number 8 today. In unit 8, we mainly look at the basically how to talk about neighborhood, how to describe places and ask about places, mainly using there is, there are, and prepositions of places is something that we'll look at in the first part of our unit. फिर हम second part of the unit में देखेंगे how to describe features of a neighborhood mainly using the quantifiers. ठीक है, ये दो चीजें हम देखेंगे. नेम ऑफ द यूनिट इज हाउ इज द नेबरहुड. नाम है यूनिट का हमारे हाउ इज द नेबरहुड. ओके, मतलब Neighborhood. नेबरहुड कैसा है. या for example, if we have to talk about our society, we will use there is, we'll say, okay, there is a garden, there is a clubhouse, there is a work from home area, there is a gym, correct? Or I might ask you, is there any temple in our society? Then you might say, yes, there is one. करेक्ट. सो ऐसे हम अपने Yeah. नेबरहुड के बारे में बात करते हैं. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट इन दिस पर्टिकुलर यूनिट. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ अ क्विक एक्सरसाइज व्हिच इज अ वर्ड पावर एक्सरसाइज. फॉर एग्जांपल, इफ आई आस्क यू what is a clothing store, you will say, it's written over here, it is a place where you, clothing store, it is a place where you Okay. find new fashions. Uh, Find new fashion. सो वैसे Correct. करके आपको सिर्फ ये रीराइट करना है आपके नोटबुक में. जस्ट रीराइट द क्वेश्चंस एंड द सॉल्यूशंस टू इट, ओके, क्विकली. बट ये यूज करके पूरा, इट इज अ प्लेस वेयर यू फाइंड न्यू फैशंस, ऐसे करके आप लिखोगे. सेम वे ट्राई टू कंप्लीट फॉर द अदर वंस आल्सो क्विकली. Done, ma'am. Okay, now same way you have to do it for exercise B. Okay, for exercise B you will just write the definition. क्वेश्चंस भी लिख सकते हो बट मेनली हमें डेफिनेशंस लिखने हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला दिया हुआ है कॉफी शॉप. वी विल से इट इज अ प्लेस वेयर यू ड्रिंक कॉफी एंड टी एंड ईट स्मॉल मील्स, करेक्ट. सो वैसे करके
बाकी जो चारों दिए हैं उनका भी लिखिए. Done, ma'am. Am I audible now? Hello. Yes. Tell me the answer. Hello. Am I audible? Yes. Huh. Tell me the answer. Okay. So the second one, yeah, uh, grocery store. The answer is A. Get food and small items हाँ for the पूरा home. आप सेंटेंस में The बोलोगे. third ओके, one, इट इज अ प्लेस वेयर यू ऐसे कर ऊपर जो सेंटेंस okay. दिया है ना उसका sentence. Okay. Hair salon. Get a haircut. पूरा Okay. सेंटेंस में बोलोगे आप ऊपर का जो लिखा हुआ है वो इंक्लूड करके. इट इज अ प्लेस वेयर यू ऊपर दिया ना यहाँ पर. Okay. हाँ. हाँ नहीं आपका वॉइस ब्रेक हो रहा था स्टार्टिंग थोड़ा से सा ही कुछ तो आई हेडफोन का इश्यू होगा. अभी आ रहा है क्लियरली? हाँ अभी आ रहा है अभी हाँ. मैं बोलता हाँ. हूँ आई थॉट कि आप बोल रहे हो थ्री और वो सो दैट्स व्हाई नो प्रॉब्लम, नो ओके प्रॉब्लम. देयर इज सम इश्यू विद द द माइक आई फोर्थ गेस. वन द फोर्थ वन इज लॉन्ड्रोमैट. laundromat and the answer is G and G is its place where you wash and dry your clothes. वेरी गुड. लॉन्ड्रोमैट The पता fifth है आपको? one laund ये Laundry nahi. Laundry नहीं is different. What we use in India as a laundry, that's different. There we go and give clothes and they wash it and give it to us, correct? Laundromat is a right place basically where they have kept a lot of washing machines. Okay, it's usually in the society itself, in the apartment building itself, or sometimes it is a common one. जैसे हमारे ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं ना वैसे ही स्टोर्स होते हैं काइंड ऑफ जहाँ पर आप जाके you put some coins and then you put your clothes for washing in one washing machine. There will be many of them. You will just use one of them for yourself. You'll put some coins and it's
starts working, and you have to wait till your clothes are done. Once they are done, you take them and get them back. Okay. So यूजुअली सोसाइटी में ही रहता है, लाइक उनके अपार्टमेंट बिल्डिंग में ही रहता है, बट कभी कभी कॉमन बाहर भी रहता है. Okay, so that's what a laundromat is. Laundromat is different from laundry. Many people get confused about it. Okay, that's why. Clear? Yeah. Yeah. The fifth one is newsstand. Hmm. Uh, it's a place where you buy newspapers and magazines. Very good. Hmm. Stadium. It's a place where you see a game or a concert. 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 Very good. The seventh one, Wi-Fi hotspot. It's a place where you can connect to the internet. Very good. Correct. Okay. I have written drug store. It's a place where you find or buy medicines. Medicines ये and मैंने लिखा. toiletries. Toiletries मतलब अपने जो साबुन, ब्रश, टूथपेस्ट, ये सब कुछ आ जाता है, तो टॉयलेटरीज की कैटेगरी में आ जाता है. Reach. Toilet reach. Okay. Okay. Maybe Gas Google that station. word later along with the correct pronunciation. Okay. Toiletries. Toiletries. Toilet reach. The second one is gas station. मैंने लिखा है it's a place where um, gas cylinder of use are stored. गैस सिलेंडर, गैस स्टेशन बेसिकली अपना जो पेट्रोल पंप रहता है, इट्स कॉल्ड गैस स्टेशन. ओके. सो इट्स प्लेस वेयर यू गेट गैस फॉर योर पेट्रोल. Vehicle. हाँ, पेट्रोल एंड डीजल को हम बेसिकली गैस बोलते हैं टुगेदर. Okay. Okay. So it's basically a gas station. Okay. Then library. Vehicle. What is a Yeah, library? library. Yeah, I have written it's the place where you read books of different categories. ये Okay. मैंने लिखा है. Read and borrow books. हम borrow भी करते हैं ना, घर पे लेके आते हैं Right, पंजाबीज. right, Correct. right. So we borrow Correct. books as well. Borrow books. Next. Post office. I have written it's a place where we or anyone post our letter or their letters. We mail. हाँ ठीक है, post भी कर सकते हैं. We mail or courier packages. We Right. mail Right. letters and we courier the packages. Cards तो अभी हम इतने ज़्यादा use Mhm. नहीं करते हैं, right? यूज नहीं करते. Right. Letters and packages. पैकेज जैसे बिजली बिल आता है ना, उसी में आता है. Okay. Next. Over here we have a quick conversation. I want you to read the conversation loudly. Here we have Greg and Mrs. Cook who are talking. Okay. So basically Greg has just moved in. So he's asking Mrs. Cook for help. Okay. Usually हम neighbors से पूछते हैं ना कि ये कहाँ पर है, वो कहाँ पर है. अभी अपना तो WhatsApp group है, so we mostly ask in WhatsApp groups. Correct. So this is a common Correct. question that people have. For example, many people ask in our group, are there any Xerox stores nearby? Xerox shops nearby? Correct? That's a very common question. Then we mainly ask about doctors, that do we have any physician in our society or nearby, near here, or which is the good one, basically. Correct? The same way Greg is asking over here. I want you to read the conversation loudly. Yes. So I have to read, right? Yes, you have to read it loudly. Okay. मैम सॉरी, कोई तो आया है गेट पे. एक No, no, मिनट. they can, they can.
सॉरी, एक्चुअली वो जेप्टो से कुछ सामान वाइफ ने मंगाई थी. No ओके, problem. I'll start reading. So, Sure. Greg, uh, excuse me. Hi, I'm your neighbor, New neighbor. Greg. New neighbor. I New am your neighbor. neighbor. Sorry, sorry. I am your new neighbor, Greg. I just moved here. Mrs. Gook. Oh, yes. Greg, I'm looking for a grocery store. Are there any around here? Mrs. Gook. Yes, there are some on Pine Street. Greg. Oh, good. And is there a laundromat near here? Mrs. Cook? Well, I think there is one across from the shopping center. Great, thank you, Mrs. Cook. By the way, there is a hair salon in the shopping center. Great. A hair salon? So why do you think she is saying that? Okay, there is a hair salon in the hair salon. It's a salon. Hair salon in the shopping center. वो ये phrase क्यों बोलती है? What do you think? Mhm. Look at the picture. ओके, या क्योंकि उसका बाल बहुत बड़ा है तो Yes, लगी he has longer कटवा hair, and many people feel that if boys have longer hair, it's a bit shabby. It's not. It doesn't suit them. Correct, and we दे. use a lot of slangs also. So it's not good actually if we go to. But she is still passing a comment over here by saying, "Oh, there's a hair salon in the shopping center too. That maybe get a haircut as well." Okay, राइट, so it's not a good वो thing to make. सरकास्टिक मार दी उसको. Not a good thing to make such a comment on someone's opinion. Of course, it's their choice. Yeah? Okay, I'll quickly play the conversation. Let us focus on the pronunciations and the intonations. Okay. Unit 8. How's the neighborhood? Page 50. Exercise 2. Conversation. I just moved in. Listen and practice. Excuse me. Hi, I'm your new neighbor, Greg. I just moved in. Oh, yes. I'm looking for a grocery store. Are there any around here? Yes, there are some on Pine Street. Oh, good. And is there a laundromat near here? Well, I think there's one across from the shopping center. Thank you. By the way, there's a hair salon in the shopping center. A hair salon? Okay. Now, if you observed in this in this particular conversation, they are using there is, there are. Correct? ये use होता है. Questions में are there any around here? Then in the answer sheet, yes, there are some on Pine Street. Now, of course, there are some. कैसे use करना है वो हम देखने वाले हैं. Don't get confused as of now. But the main thing is, many times when we are referring to these places, we take the name of the place also. Okay? Usually जब हम जगह का नाम लेते हैं तब हम स्ट्रीट का नाम ज़्यादा यूज़ करते हैं. Okay, for example, we'll say on the main road, or usually in India or in our Pune at least, we use the name of the buildings when we talk about it. Correct? So that's why we will look at the prepositions of position as well, how to use them. But the main thing is कि street का नाम भी हम बहुत बार use करते हैं. Okay? So that is very, very important because many people don't understand these references, so that becomes very important again. Okay, now as I said, in this particular conversation or particular grammar part, we are going to look at how to use there is, there are, and how to make questions also with them, along with how to use one, any, and some. Okay, अभी सबसे पहले we look at the word there. Abhi, you might remember when we started our units, when we started our course, we looked at the sentence structure, right? The sentences that we make in English. What is the sentence structure that we use? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. Correct. But अगर sentence बना रही हूँ, there is one or there is a grocery store on Pine Street. अभी यहाँ पर subject क्या है, verb क्या है, and object क्या है? ओके. There is a grocery store on Pine Street. ओके, सो
अभी इसको सब्जेक्ट लेस बोलते हैं क्योंकि देयर इज वन। हाँ, तो अभी देयर इज वन को अगर मैं देयर इज वन डोंट गेट कंफ्यूज। हमारा यहाँ पर थोड़ा सा सब्जेक्ट, हमारा जो सेंटेंस है बेसिकली थोड़ा सा चेंज हो जाता है। द वे आई सेड हियर चेंज वी हो विल रहा बी लुकिंग एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अभी हमें सब्जेक्ट है। वर्ब राइट। ऑब्जेक्ट यूज करके कैसे हमें सेंटेंसेस बनाना है अभी तक हमें पता है, करेक्ट, वो इजी वाले होंगे। अभी हम थोड़े से हटके राइट। सेंटेंसेस कैसे बनाना है वो हम देख रहे हैं, करेक्ट। सो हियर द राइट। सब्जेक्ट इज ग्रोसरी स्टोर। There is a grocery store on Pine Street. Correct. So grocery store ये हमारा सब्जेक्ट है. On Pine Street is our object part over here. अभी हमें हमेशा सेंटेंस में एक वर्ब चाहिए, तो हम यहाँ पर जो हमारा वर्ब भी हमने is am are करके चेंज करके हम यूज करते हैं, वो देखा था, वो हम is यूज कर रहे हैं. ओके. There is just a dummy subject. उसको हम जस्ट यूज कर रहे हैं बिकॉज हमें कुछ तो चाहिए वहां पर यूज करने. हाँ एक है, हमें क्या बोलना है, हाँ एक है पाइन स्ट्रीट पे, करेक्ट, एक ग्रोसरी स्टोर है पाइन स्ट्रीट पे, ये हमें बोलना है. तो हम देर, हम जस्ट उसको यूज कर रहे हैं, उसका कुछ मीनिंग नहीं है यहाँ पर, ठीक है. इट्स कॉल्ड अ डमी राइट। सब्जेक्ट और एन एम्प्टी सब्जेक्ट ओवर हियर. ओके. राइट। So I will say for singular I will use there is, and for plurals I will use there are. Right, easy, ये तो हमें already पता है, it's implied basically. So if you ask me is there a laundromat near here, अभी आपने सब्जेक्ट क्वेश्चन में सब्जेक्ट सिंगुलर में यूज किया है, तो मैं आंसर में भी यूजुअली सिंगुलर ही यूज करूंगी. अगर बहुत सारे हैं लग के देन आई विल यूज प्लूरल. ओके. फॉर एग्जाम्पल समझो एक हाथ स्ट्रीट है जहाँ पर बहुत सारे ड्रग स्टोर्स है, मेडिकल स्टोर्स होते हैं ना बाजू बाजू में, करेक्ट. तो आई कैन यूज देर आर सम ऑन दिस स्ट्रीट, ठीक है. बट अगर एक है तो मैं एक ही बोलूंगी. फॉर एग्जाम्पल यस देर इज वन मेडिकल स्टोर इन आवर सोसाइटी, ऐसे करके हम बोल सकते हैं, ठीक है. ये हो गया पहला वाला. सो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वी विल जस्ट से इज देयर अ लॉन्ड्रोमैट नियर हियर. So simply I can answer, it's a yes and no question. Simply I can answer yes there is or no there isn't. ऐसे करके मैं आंसर दूंगी. अभी there is अगर मैं यूज करती हूँ तो ऑफकोर्स मैं वो कहाँ पर लोकेटेड है ये बताऊंगी, करेक्ट. तो हम यहाँ पर there is के बाद में फुल स्टॉप डालेंगे एंड फिर हम एक्सप्लेन करेंगे there is one on the डैश डैश स्ट्रीट, या फिर जो भी रोड का नाम रहा. अपने यहाँ पर स्ट्रीट नहीं, हम रोड यूज करते हैं मोस्टली, तो रोड का जो भी नाम रहा वो हम यहाँ पर यूज करेंगे. यस देर इज वन ऑन डैश डैश रोड, ठीक है, और डैश डैश बिल्डिंग, ऐसे करके हम बोल सकते हैं, ठीक है. अभी वन हम क्यों यूज कर रहे हैं, जो हमने यूनिट 3 में देखा था, वन हम यूज कर रहे हैं एज अ प्रोनाउन टू रिप्लेस द सब्जेक्ट ओवर हियर. लॉन्ड्रोमैट, ग्रोसरी स्टोर, ये सारे वर्ड्स हमें वापस वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. अभी सेम वे अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, द ग्रोसरी स्टोर्स, ठीक है. सो यू विल आस्क आर देयर एनी ग्रोसरी स्टोर्स नियर हियर, देन आई कैन से यस देयर आर सम ऑन द मेन रोड, ओके, और नो देयर आरंट एनी, ऐसे करके हम इसको यूज करेंगे. नाउ वी हैव वन. वन मैंने जस्ट बताया, वी आर यूजिंग इट एज अ pronoun, we are using it to replace the subject. So instead of saying there is a laundromat across from the shopping center, I will say there is one across from the shopping center. तो मैं one use कर रही हूँ instead of laundromat again over here. अभी some हम use करेंगे again to talk about plural subjects. हमने one use किया for singular subject, अगर plural subjects है तो हम use करेंगे some. Yes, there are some on the main road और मेन स्ट्रीट वी कैन से, ओके. ये हो गया हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए. बट अगर नेगेटिव सेंटेंसेस है तो हम यूज करेंगे एनी, ओके. आई विल से नो देयर आरंट एनी, नो देयर आरंट एनी अराउंड हियर, बट तो आगे जाके है तो हम बताएंगे नो देयर आरंट एनी, बट इफ यू गो ऑन डैश डैश स्ट्रीट यू विल फाइंड सम, ऐसे करके हम बोल सकते हैं, ठीक है. अभी सेम वे क्वेश्चन में भी हम एनी यूज करते हैं. आर देयर एनी ग्रोसरी स्टोर्स नियर हियर, सम नहीं यूज करेंगे हम, एनी यूज करेंगे. आर देयर सम ग्रोसरी स्टोर्स नहीं, आर देयर एनी ग्रोसरी स्टोर्स नियर हियर, ओके. सिंगुलर है तो सिर्फ हम अ यूज करेंगे, वहां पर हमें सम एंड एनी की जरूरत नहीं है.
सिर्फ प्लूरल के टाइम पे हम एनी यूज करेंगे. ओके, क्लियर? Now we have the prepositions of position. अभी prepositions of position are mainly used to talk about relation of one object to another object. Okay, for example I can say the laptop is on the table. Correct? तो एक ऑब्जेक्ट के रिलेशन में दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, टेबल के रिलेशन में लैपटॉप कहाँ पर है. सेम वे आई कैन से द फोन इज बिसाइड द लैपटॉप. करेक्ट? तो एक ऑब्जेक्ट की जगह पे दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, वैसे करके. सो फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन वी यूज prepositions of position. So when we are talking about streets, when we are talking about places, we need these prepositions again to identify, to place out where these things are located. करेक्ट? सो एक एक करके हम देखेंगे. मेन जो हमारे है वो सबसे पहले है ऑन. ओके, ऑन वी यूज इट व्हेन समथिंग इज रेस्टिंग ऑन समथिंग. ठीक है, कुछ मूवमेंट नहीं है, कोई चीज के ऊपर कोई चीज रखी हुई है. द लैपटॉप इज ऑन द टेबल, वो मूव नहीं कर रहा है, वो रखा हुआ है, तो आई विल यूज ऑन. ओके, देन आता है नेक्स्ट टू या फिर बिसाइड. नेक्स्ट टू या फिर बिसाइड मतलब किसी चीज के बाजू में कोई चीज है. ठीक है, तो हम यूज करेंगे नेक्स्ट टू, नहीं तो फिर बिसाइड. अभी बिसाइड्स अलग है, बिसाइड अलग है, रिमेंबर दैट. ओके, देन आता है नियर या फिर क्लोज टू. अभी नियर टू नहीं हम बोलते हैं, रिमेंबर दैट अगेन. नियर टू इज इनकरेक्ट ग्रामर. क्लोज टू होता है, नहीं तो फिर नियर होता है. आई विल से आवर सोसाइटी इज लोकेटेड नियर पंचशील टावर्स, ओके, और क्लोज टू पंचशील टावर्स. आई विल नॉट से नियर टू. नियर टू गलत हो जाएगा, रिमेंबर दैट. ठीक है, फिर आता है अक्रॉस फ्रॉम एंड अपोजिट. अक्रॉस फ्रॉम एंड अपोजिट दोनों का मीनिंग सिमिलर है, बस इतना ही डिफरेंस है. अक्रॉस फ्रॉम मतलब हम कोई चीज पार करके जा रहे हैं तो फिर अक्रॉस फ्रॉम आ जाएगा, या फिर सामने सामने है तो सिर्फ अपोजिट बोल सकते हैं. जैसे कि हम नदी क्रॉस करके जा रहे हैं तो हम अक्रॉस फ्रॉम यूज करेंगे. सेम वे हम पंचशील टावर जाने के लिए रोड क्रॉस करके जाएंगे ना, सो वी कैन यूज अक्रॉस फ्रॉम. ओके, that's the only difference that we have. Then we have in front of. In front of मतलब किसी चीज के सामने. For example, my house is facing पंचशील towers. ठीक है, ऐसे करके, और in front of पंचशील towers ऐसे करके हम बोल सकते हैं. या फिर behind या फिर in back of. कोई चीज के पीछे अगर कोई चीज है तो हम back of बोलेंगे. For example, our society is located behind Barclays. करेक्ट? वैसे फिर बिटवीन आता है. बिटवीन हम यूज करते हैं मेनली दो चीजों के बीच में अगर कोई चीज रहे तो. अमोंग हम यूज करते हैं दो से ज्यादा चीजों के बारे में जब हम बात करते हैं. ओके, बिटवीन we use it when we are talking about two things. When we are talking about two things in middle of two अगर हम बोल रहे हैं तो हम between यूज करेंगे. ओके, वो चीजें हो सकती है, लोग हो सकते हैं, लार्ज ग्रुप के बीच में भी हो सकते हैं. A small table was lying between the two almirahs. He walked in the garden between the flower beds. ठीक है, now same way हम among यूज करते हैं बट दो लोगों से या फिर दो चीजों से ज्यादा है तो. The hare sat hiding among the bushes. Okay, hare is something similar to rabbit. ठीक है, distribute the question paper among the candidates. ठीक है, दो से ज्यादा लोग हैं तो तब हम among यूज करते हैं, between करेंगे. रिमेंबर दैट, वो इनकरेक्ट है. नाउ along with that, at हम प्लेस के लिए भी बहुत बार यूज करते हैं. ओके, at जब हम प्लेस के लिए यूज करते हैं we use it to talk about an exact point. For example, I will say let's meet at the entrance of evening. ठीक है, तो एग्जैक्ट पॉइंट के हम बात करें जो कि है एंट्रेंस ऑफ एविंग और एट द मेन गेट. ठीक है, फिर जैसे मैंने बताया यहाँ पर भी हाउसेस, विलेजेस, स्मॉल टाउन्स के लिए हम एट यूज करते हैं सेम वे में. देन इन यूज होता है व्हेन वी टॉक अबाउट लार्जर एरियाज. सो आई विल से वी लिव इन पुणे, वी लिव इन खराड़ी. ठीक है, आर सिटी इज इन महाराष्ट्र, तो हम लार्जर एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि टाउन्स, स्टेट्स, कंट्रीज. तो हम so we will say at Karol Bagh in New Delhi, at Ambala, and then in England. Yeah,
सेम वे जब हम एंड की बात करते हैं, we'll say at the end and in the middle of the road. ठीक है, at the end of the road, in the middle of the road. या फिर at हम जनरल नेबरहुड के बारे में भी यूज करने के लिए बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी सैट एट द टेबल. हम टेबल पे नहीं बैठते, टेबल के पास बैठते हैं. वी डोंट से आई सैट ऑन द टेबल, वी सैट एट द टेबल टू टेक आवर लंच. ठीक है. और प्लीज वेट फॉर मी एट द वेव्स पीवीआर. वेव्स पीवीआर बेसिक थिएटर की बात कर रहे हैं. देन टर्न लेफ्ट एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग. तो अगेन हम एग्जैक्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं. ओके, बट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इन मतलब कोई चीज के अंदर कोई चीज. ठीक है. जैसे कि देयर आर 2 पेप्सी बॉटल्स इन द रेफ्रिजरेटर. यू विल फाइंड अ स्टेपलर इन द ड्रॉअर. ठीक है, दैट्स द बेसिक डिफरेंस. थोड़ा ग्रामर टॉपिक बड़ा है यहाँ पर, कुछ कंफ्यूजन रहा तो यू कैन आस्क. ऐसे कोई चीज जो आपको नहीं Sure. समझी. ओके, क्विकली राइट डाउन द रूल्स इन शॉर्ट. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रूल्स है यहाँ पर, तो इन शॉर्ट लिखिएगा, पूरा मत लिखते Right. बैठिए. मेन चीज जो है, जैसे कि देयर इज फॉर सिंगुलर, देयर आर फॉर प्लूरल, उतना ही आपको लिखना है. ठीक है, यहाँ पर पहले हम क्विकली एग्जांपल सेंटेंस देख लेते हैं. इज देयर अ लॉन्ड्रोमैट नियर योर? वी कैन से यस देयर इज. देन जैसे मैंने बोला, देयर इज वन अक्रॉस द शॉपिंग सेंटर. नो देयर इजंट, बट देयर इज वन नेक्स्ट टू द लाइब्रेरी. तो थोड़ा दूर है, तो हम यहाँ पर पास में नहीं है बट दूर है, ऐसे करके हम बोलेंगे. So I'll quickly play this part. Listen to it with clear pronunciations. Page 51. Exercise 3. Grammar focus. There is, there are. 1. Any, some. Is there a laundromat near here? Yes, there is. There's one across from the shopping center. No, there isn't. But there's one next to the library. Are there any grocery stores around here? Yes, there are. There are some nice stores on Pine Street. No, there aren't. But there are some on 3rd Avenue. Again, ये street के नाम. No, there aren't any around here. 3rd Avenue, Prepositions. ये सारे street की name. Okay? Right. Quickly write it down. Short में लिखो, जल्दी because अभी और थोड़ा हमारा बाकी. Done, ma'am. Okay, next. Done. Okay, next. ये तो रूल आपको ऑलरेडी पता है. Next. Some and any.
डन मैम. ओके नेक्स्ट, ये शॉर्ट में आप लिख दीजिए. डन मैम. Okay, now we will quickly look at some conversations which highlight the same things that we just looked at. Okay, I'll play the Yeah. conversations. Tell me once they're audible. My city. Is it audible? Yes, my city. Pay attention to the Hello everyone. Welcome to Rio. I'm in the bus. There are a lot of people here. In Rio, there are a lot of things to see. There is a big stadium. The Maracana. There is the Niterói Bridge. There are 2 airports in Rio. One is domestic. The other is international. There are a lot of parks too. And when it rains, there are some traffic jams. And it floods. But after the rain comes the sun. There are a lot of beaches in Rio. And there is the Christ. There is, and there are. There is.
लास्ट में जो उसने बोला क्राइस्ट, राइट? Christ, हाँ, is the name of the monument which is there, Yep. the Christ. Okay. ओके. हाँ, जैसे the Statue of Liberty है ना, वैसे रियो हाँ, में the Christ, the Redeemer करके भी लिखता है. ओके. One more one. Hi, Charlie. I'm Fernando. Nice to meet you. You too. Welcome to Rio. Let me show you my flat. Here is the living room. It's nice. Come with me. Here is the kitchen. It's very clean. Here is the bathroom. And here is your bedroom. It is really nice. Do you like living in Rio? Yes, I do. And you're from Chicago, right? Yes, I'm from the US. You're gonna enjoy your time in Rio. I'm sure I will. Are there any good coffee shops around here? Yes, there are. I want to eat this famous pão de queijo. There is a good coffee shop just next corner. Are there any supermarkets? No, there aren't. But there's an express market, 2 minutes walking. Good. Is there a bank? No, there isn't. But there's an ATM in the express market. Are there any pharmacies? Yes, there is one next to the market. How do I get to Copacabana? Well, there aren't any train stations. But there is a bus station. Bus 524 will take you directly. Good. Are there any churrascarias near here? No, there aren't. But there is a good restaurant near the beach. That's good. Are there any phone shops around here? Yes, there are some. I'm gonna sleep now. Get some rest. Good night, Fernando. Good night, Charlie. Wait, one question. What's the Wi-Fi password? Okay. I'll share these conversations with you. I'll share the links with you also. You can go through them to understand the usage. Now, mainly for the homework. Okay. Here, you have to make the sentences same way that they were making. ठीक है, यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है. It's kind of a 2D map, but it's in 3D. Understand that. ठीक है. Now, first, जो भी जगह के नाम यहाँ पर ऊपर दिए हुए हैं उनके लिए आप क्वेश्चंस बनाओगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इज देयर अ जिम अराउंड हियर. अभी जो
फ्रेजेस जो ऊपर दी है वो सिंगुलर में है तो आप इज देयर यूज करोगे, अगर प्लूरल में है तो आर देयर यूज करोगे. ओके. Is there a gym around here? First, you'll make all the questions, leave one line or two lines for the answers. Okay, when you make the questions. Once you are done making the questions, you will look at the map. Okay? For example, if I ask you, is there a gym around here? How will you answer it? By looking at the map. Right. So there is the हाँ, पहले yes or no gym बोलोगे. Yes or no question है. of Is there a gym around here? So you will say yes. 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 Yeah. This is at Main There Street. is one. There is one. So same हमने जो अभी एग्जांपल में देखा ना वैसे ही फ्रेज हम यूज करना है. Yes, there is one on Main Street. मेन स्ट्रीट बोल सकते हो आप. दैट वाज करेक्ट. ठीक है. तो हम हमेशा ना जब भी अभी एग्जांपल्स में वैसा नहीं दिया था बट इन रियल लाइफ व्हेनेवर वी आर एक्सप्लेनिंग प्लेसेस वी ट्राई टू गिव टू रेफरेंसेस एटलीस्ट. ओके. टू रेफरेंसेस विच आर ऑन दैट स्ट्रीट इटसेल्फ. ठीक है. एग्जाम्पल अगर आप बोलोगे यहाँ पर कि हाँ फर्स्ट नेशनल बैंक के पीछे है, it is behind First National Bank. Now I'm standing on Main Street. I cannot see the First National Bank. Correct? If you say I'm standing near Panchshil Towers, अपना Panchshil Tower का चौक है, and I'm standing over there, and you say yes it is behind Barclays. अभी वहाँ से मुझे Barclays नहीं दिख रहा है ना, चौक से मुझे Barclays नहीं दिखेगा. Correct? So you have to Correct. tell me the reference of something that is something that I can see from that place. ठीक है. So I will say yes there is one on Main Street between the post office and Hardy's department store. तो हमने दो रेफरेंस दिए, एक तो स्ट्रीट का नाम दिया है एंड किस चीज के बाजू में है या फिर किस चीज के बीच में है. नाउ आई कैन सिंपली से इट इज नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस, इट इज नेक्स्ट टू द Hardy's department store. ये भी मैं बोल सकती हूँ बट टू मेक इट Yeah. बेटर वी आर सेइंग बिटवीन द पोस्ट ऑफिस एंड द Hardy's department store. ठीक है. तो आइदर किसी चीज के बाजू में है, किसी चीज के सामने है, अक्रॉस फ्रॉम है, वो हम रेफरेंसेस ज्यादा देंगे. ओके. नाउ सेम वे अभी यहाँ पर देखो आंसर वेरी करेगा. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन. आई कैन आल्सो से यस इट इज ऑन द मेन स्ट्रीट, देयर इज वन ऑन द मेन स्ट्रीट अक्रॉस फ्रॉम द गार्डन, क्योंकि सामने गार्डन भी है ना. राइट. Right. तो बहुत सारे Right. वेरिएबल्स होते हैं बट वी हैव टू मेक श्योर दैट द पर्सन रीचेस द प्लेस. ठीक है. वो कहीं भटक ना जाए. या इफ यू गोल गोल सिंपली घूम से के इट इज नियर द गैस स्टेशन, अभी नियर द गैस स्टेशन बहुत सारी चीजें. ठीक है. इट शुड नॉट बी Right. एब्स्ट्रैक्ट, इट शुड बी एग्जैक्ट. अंडरस्टूड. दैट इज हाउ यू विल मेक द आंसर्स फॉर दिस वन. ठीक है. स्ट्रीट का नाम एंड किस चीज के बाजू में है या फिर किस चीज के आजू बाजू मेनली, या अक्रॉस फ्रॉम मैक्स टू मैक्स यूज कर सकते हो. बट रिमेंबर अगर अक्रॉस फ्रॉम आप यूज कर रहे हो, जो मैप जैसे आपको दिख रहा है बहुत सारी चीजों के फेसिंग अपने यहाँ पर है. ठीक है. तो अगर आप बोलोगे जैसे मैंने बोला इट इज अक्रॉस फ्रॉम वॉकर्स ड्रग स्टोर, अगर आप बोलते हो तो जिम के वहां से वॉकर्स ड्रग स्टोर नहीं दिखेगा. ठीक है. तो वो गलत हो जाएगा. रिमेंबर दैट फेसिंग अपने यहाँ पर है, उस साइड पे नहीं है. Okay, so be a little mindful when you are looking at the map. Imagine it in real life. Hmm? So, in such a way, you will try to make the questions first and then the answers to them. Answers बड़े हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेज में भी आप आंसर कर सकते हो, कोई इशू नहीं. ठीक है. So we will stop over here for today. We will continue tomorrow. I want the answers ready by tomorrow because we will be solving some more exercises. ठीक है. Yeah. Clear? Sure. Okay, we will stop over here. We will continue tomorrow. Okay, better. Any questions? Yeah. Anything you did not understand? आज का थोड़ा ग्रामर टॉपिक No. बड़ा था, मैं रिकॉर्डिंग भी आपके साथ में शेयर कर दूँगी. ठीक है. चलेगा. हाँ, थोड़ा ज़्यादा बॉम्बार्डिंग था इसमें. नहीं ठीक है. हाँ. ठीक है. ठीक है. It's okay. चलो. I will see you चलेगा. tomorrow then. Bye bye. Take Sure. care. Good night. Bye.